A very good evening and welcome to Verdict 2015, where we get you the day's top developments when it comes to campaigning for the Bihar elections. I'm Tracy Shilshi and here are the headlines today. BJP bigwigs address campaign rallies. Prime Minister Narendra Modi promises a double celebration for NDA voters in the state. Home Minister Rajnath Singh targets JDU-RJD Congress alliance, claims development has suffered in the state because of them. RSTV catches up with Bihar JDU President Bashish Narayan Singh, discusses prospects of the Grand Alliance in the assembly polls. And today's Verdict 2015 spotlight on Lakhisarai Vidhan Sabha constituency. The elections to this backward region will be in the first phase. Prime Minister Narendra Modi led the charge for his party in the Banka constituency today in Bihar, expressing confidence that the BJP will win. Modi assured that he will remain with the state every step of the way towards its development. A double celebration this Diwali is what the Prime Minister is promising for Bihar. Campaigning for his party in the Banka constituency, Narendra Modi said BJP voters will celebrate the festival and the poll results this time. बिहार दो दिवाली मनाएगा एक तो जिस दिन नतीजे आएंगे और फिर कुछ दिन बाद जो दिवाली आएगी वो दिवाली. Modi said India can't progress unless Bihar moves forward. He said his recent US visit showed him what the state's people are capable of. अमेरिका में रहने वाले बिहार के मेरे भाई वो बिहार को आगे देखना चाहते हैं, वो बिहार को बदला हुआ देखना चाहते हैं. वो बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें खुशी तब तक नहीं होगी जब तक पूरा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा. Modi also attacked the Nitish Kumar government in the state. He claimed that the state has been held hostage by the ego of a few people. मुझे तो चिंता है कि मैं 1,65,000 करोड़ रुपया देने का तय करूं तो भी शायद इनका अहंकार इतना होगा वो तो घोषणा कर देंगे हमें नहीं चाहिए, मोदी का पैसा नहीं चाहिए. अरे ये पैसा मोदी का नहीं है, ये बिहार की जनता के हक का पैसा है. Stating that India's progress is not possible without the progress of Bihar, the Prime Minister said the central government had opened its coffers for the state's progress. Banka is the first place that Modi chose to campaign in for the BJP after the Election Commission announced the poll dates for the state. Bureau Report, Rajya Sabha TV. And to discuss this, we've got Professor Naval Kishore Chaudhary, who's a political analyst, joining us from Patna this evening. Sir, this Modi's rally that we saw today, the first, in fact, after the election dates were announced, did it have that same kind of fervor that we saw in the past few rallies, or, like he claims, was it bigger? Absolutely. Rallies by the Prime Minister would obviously have some impact on the outcome of Bihar elections. It's very natural, a powerful leader who leads the NDA at the center and has emerged as an effective campaigner, not only inside the country but outside the country, will have its impact. More so when the Prime Minister announces package containing provisions for expenditure, huge amount, in spite of the fact that the Chief Minister of Bihar has deflated and often said that these are committed expenditure. Nonetheless, it's a huge expenditure which the Prime Minister is promising and committing to Bihar. Naturally, those who want development in the state to take place would be influenced by this, would be favorably inclined to go with the NDA. And as a matter of fact, even though the NDA
also uses the caste card, also plays the identity politics based on caste and religion. The main focus of NDA campaign in the state has been development, and it has had some impact. With every rally and with every turnout at Prime Minister's rally, you find that the prospects for NDA coming to power in Bihar brighten. And I'm sure this Banka rally will have its impact, and this impact will be a positive impact in favor of NDA. All right. Prime Minister Modi also talking about, like you pointed out, the package, the fact that, Chief Minister Nitish Kumar made fun of that package by the way it was announced. Do you think that has backfired for the Chief Minister? Seeming a bit arrogant, because Modi himself saying that if Nitish Kumar comes to power, for all you know, he's so arrogant, he may actually give back the money. Do you think this is backfired for the Grand Alliance, making fun of that economic package? Yes, but for a while. Yes, the way the package was announced by the Prime Minister, the language, the tone, the temper, and the tenor of the Honorable Prime Minister announcing the package did have some adverse impact. People in Bihar, even those people who see favorably to NDA, didn't take it kindly. Arrogance of any sort by anyone, including the Honorable Prime Minister, is not appreciated. But with the passage of time, the adverse impact gave way to optimism, rational thinking, objective analysis. Those people who initially reacted negatively to the way this package was announced came to the conclusion that after all, the Prime Minister of the country is committing this huge amount. Why? Even if these schemes were in the pipeline, commitments were not made by the previous Prime Ministers, previous government. At least the Honorable Chief Minister of Bihar had to come on record saying that 90% of the proposed, in fact, to be exact, 1,08,000 crore out of that 1.25 lakh crore is already committed. It were older schemes. This, by implication, the Chief Minister accepted that the centre didn't do anything to neglect the state. The package forced the Chief Minister to accept that 1.08 lakh crore was already committed. That means centre was not that adverse to the prospects of development in Bihar. That was not inimical, if I could use such a word, to the state of Bihar. So people realize that after all, Prime Minister is a Prime Minister. Prime Minister, head of the government, promising, committing, means something. Yes, to counter this, the Chief Minister also came with a proposed utopian dream of spending 2.7 lakh crores. And when asked, he said this is his vision. Now, everybody has the right to have a vision, let alone the Chief Minister of Bihar, who is highly respected in this state even now. And I have also some respect left for the Honorable Chief Minister. But the very fact the Chief Minister had to counter with an alternative package of 2.7 lakh crore to counter 1.25 lakh crore offer of the Prime Minister substantiate the point that the package politics was not in vain. Package politics is still going on. Freebies are being announced by political parties day in and day out. Election Commission has taken note of it. Yes. But at the end of the day, people will judge the governments on the basis of performance, both at the centre and in the state over the past so many years. In case of central government, 1.5 years roughly, and in the case of Bihar, not only last 10 years. Now that Manya Laluji has
sided with Manya Nitish ji, Yes. people will take a stock of the performance of Mahagathbandhan Absolutely. for the last 25 years. Absolutely. And that too legitimately, because now these forces have come to one fold and claiming that they are going to re-enact Mandal Raj too. People will judge them for the kind of politics it all meant for the state of Bihar for the last 25 years. Yes, At in the fact, end 10 of days to the, go for that first phase, day and we'll have to again, see eventually people how will of course, the decide elections the pan out. destiny of Bihar in the next elections. That's right. Professor Chaudhary, thanks so much for joining us, giving us an idea of where the situation stands as far as the political parties is concerned. Of course, saying that the NDA is making gains with the rallies by Prime Minister Modi. Meanwhile, Bihar Chief Minister Nitish Kumar addressed a rally for the JDU in Samastipur today, calling for a united front against the BJP. He alleged that the party had given tickets to people with criminal antecedents. सारे उम्मीदवारों का नाम एक साथ महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया। यह है महागठबंधन में एकता और मजबूती। और दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन आपस में एक दूसरे पर न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप लगाए लोगों ने। This is, of course, a big election for the BJP, but even more so for the Grand Alliance with Nitish and Lalu coming together after years, or for that matter, for the first time. Our correspondent Neelu Vyas, in fact, caught up with Bihar JDU President Bashish Narayan Singh to discuss the Grand Alliance. जेडीयू के लिए कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं और जो आसान जो चीज़ें हैं वो कम हैं। क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं? इससे मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। नीतीश कुमार को जो पिछले बार 2010 में दोबारा समर्थन मिला था, वह समर्थन समाज के सभी वर्गों के, लेकिन इस बार जो आपने गठबंधन किया है आरजेडी के साथ, उस पर लोगों को बहुत डाउट्स है। लालू जी का लोगों के बीच में जनाधार तो है। लालू जी 15 वर्षों तक बिहार में भी किए। अभी वो मंडल और कमंडल की राजनीति की बातें कर रहे हैं, विकास उनकर उनके प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं। मोहन भागवत का बयान देख लीजिए। बीजेपी के लोगों ने जितना जातियां रैली किए हैं, इसको देख लीजिए। क्या जरूरत था आरक्षण का विवाद यहाँ छेड़ने का? मंडल कमंडल पर तो चर्चा हो जाती है और इसमें लालू यादव को लोग चिन्हित कर देते हैं। जो आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ है और जिस तरह से लालू जी लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक यादव कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, उससे आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होगी सर, लेकिन जब कास्ट और डेवलपमेंट को जब आप एक साथ लेकर आएंगे तो लोगों के बीच में कैसे उस बात को परोसेंगे? वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज। नीतीश कुमार के 10 वर्षों का जो शासन रहा है, उसका मेन प्लैंक रहा है न्याय के साथ विकास। पूरा जो एक कैंपेन है वो बहुत ही नीतीश सेंट्रिक है। आपका सेकेंड रंग लीडरशिप कोई नजर नहीं आ रही है। हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को नेतृत्व इसलिए दिया गया कि बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा इस रूप से लोगों के सामने आ गया है कि उनकी ख्याति एक विकास पुरुष के रूप में होती है। Meanwhile, Home Minister Rajnath Singh today addressed a rally for the BJP in Jammu district, targeting the JDU-RJD alliance. He said that development has suffered in the state because of them. Referring to the JDU, RJD and the Congress alliance, Rajnath also said that the three alliance partners could never stay together, so the public should not put their faith in the Grand Alliance. He also claimed that the government has given a fitting reply to Pakistani forces on the border. राजद और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है, किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक भी इस हकीकत को स्वीकार करने लगे हैं कि इस बार बिहार में यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सारे राजनीतिक विश्लेषक भी सच्चाई को। Meanwhile, amid attacks by the Grand Alliance on the issue of reservation policy, BJP President Amit Shah today, of course,
reaffirmed his party's support for the quota system. He also charged his political opponents with misleading people on the matter. At an election meeting in Aurangabad, Shah also said that there would be no change in the existing quota system. He urged party workers to explain the party stand to voters. He also attacked the leaders of the Grand Alliance of not being gracious enough when the Prime Minister announced a special package for Bihar. But that will take a quick break here, but more election news follows in just a bit. Do stay with us. Tales that inspire, stories of social change. A salute to diversity, promoting public discourse. Events that motivate, inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries every Friday at 10:30 p.m, Saturday 12:30 p.m, and Sunday at 1 p.m. Welcome back. Now, RJD Chief Lalu Prasad Yadav escalated the war of words against the BJP today, taking to Twitter. In fact, Lalu took on Prime Minister Narendra Modi on his rally in Banka constituency that took place earlier today. He warned Bihar residents to be wary of falling prey to what he called fake promises by BJP leaders. हम शर्मिंदा हैं, बापू हम शर्मिंदा हैं, आपका कातिल आज भी जिंदा है। बिल्कुल एकदम लगता है कि वो अपना सेंस खो बैठे हैं। ये सामने हार देख करके वो अपना सेंस खो बैठे हैं और सेंसलेस बयान सब दे रहे हैं। वो सिर्फ अपना अटेंशन करने के लिए तरह तरह के उलझुल बयान देंगे। उनको एकदम इग्नोर करने की जरूरत है। Meanwhile, our correspondent Ravindra Sheoran in fact caught up with the first-time candidate and RJD leader Tejasvi Yadav in Patna. Take a look. अहम मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं। पक्के पुल का हम लोगों ने अभी कुछ महीने पहले शिलान्यास हुआ है और इसी पुल की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ को लेकर के, और बाकी बिजली रोड वगैरह ठीक ठाक है, मगर लोगों को इंदिरा आवास की जरूरत है। जबकि आरजेडी को जो है थोड़ा सा परंपरागत वोटर और उस तरीके का माना जाता है, तो आप लोग किस तरीके से इस चुनौती को लेंगे, खासतौर पे जो फेसबुक की जनरेशन है और जो व्हाट्सएप वाली जनरेशन है? इतनी भी नई चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, आजकल देखेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टियों का भी सिनारियो चेंज हो गया है, कॉर्पोरेट कंपनियों के तरह काम करने का काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको लगता है कि आरजेडी भी समय के साथ बदल गई है? एकदम बदल गई। आप देखे होंगे आरजेडी का अपना वेबसाइट है, आरजेडी के नेता लालू जी ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, हम लोगों ने टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कर रखा है, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, हमारा कॉल सेंटर है और हमारी टीम भी बैठती है सोशल मीडिया पे। तो आप बिल्कुल यंग हैं, युवा चेहरा है पार्टी का, तो आप लोग जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, जाति के हिसाब से वोट मांगने वाले नहीं हैं? देखिए, जाति जो है वो सच्चाई है, और जो जाति है ये हमने और लालू जी ने और हमारी पार्टी ने नहीं बनाया, ये कब से चला आ रहा है। जो भी दोषी हैं उन पे हम बात करते हैं गरीबों की। हम तो चाहते हैं कि सबका 100% लोगों का विकास हो। तो सुनने में हर चुनाव में हम लोगों को आ रहा है कि जंगल राज का जिक्र, तो वो चीज भी कहीं आड़े आ रही है आपको, या आपकी छवि को प्रभावित कर रही है? देखिए, ऐसा कोई नहीं है। बिहार की जनता सारे शासनों को देखने का मौका मिला। अगर जंगल राज होता तो 15 साल ऐसे ही हम लोग राज नहीं करते। तो अगर नीतीश जी की सरकार आती है तो क्या हम समझे कि हमारी बातचीत फिलहाल जो है अगले डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हो रही है? देखिए, ये डिप्टी सीएम का भी सवाल नहीं है, सवाल था मुख्यमंत्री का, तो हमने घोषित कर दिया। Well, that's of course Tejasvi Yadav of the RJD, but now it's time for some more political reactions in our section Poll Bits. टीबी वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ गरीबी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बेकारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, किसानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी घोषणा की है अरुण जेटली ने, वो 2014 के 15 महीने हो गए, उसको कहीं पूरा करते नहीं है, फिर से नया पैकेजिंग करके दे दी, फिर
फिर कह दिया कौन विकास किया है कि विकास खोज रहे हैं? वो विकास करेंगे? एमपी के चुनाव में विकास के नाम पर बिके कि नहीं बिके? वोट तो ले लिए, गरीबों को ठग लिए, क्या दे दिए? काला धन आ गया, 3 महीना में काला धन आ रहा था, 15-15 लाख गरीबों के खाता में जा रहा था, कहाँ गया? महंगाई कहाँ है? चरण छू रहा, आसमान छू रहा महंगाई। 2014 में भी वो भी अपना दिए थे घोषणा पत्र, तो उसमें कितना अब तक लागू हुआ 16 महीना के बाद? और जो विजन डॉक्यूमेंट है कि ये स्कूटी देंगे, तो काहे नहीं अब तक दिए झारखंड में? क्यों नहीं दिया छत्तीसगढ़ में? क्यों नहीं दिया मध्य प्रदेश में? तो बिहार के लोगों को लुभाने के लिए, फंसाने के लिए, ठगने के लिए ये सब है। लोकसभा चुनाव में जो वायदे किए गए थे उनमें से एक प्रमुख वायदा बताए। कल सरकार ने डिस्क्लोज किया है कि 3700 करोड़ रुपए के काला धन की जानकारी मिली है, जबकि इसको 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ बताया जा रहा था चुनाव के अवसर पर। हर मौके पर मोदी सरकार फेल है। Away from the war of words, now turning our focus to constituencies, and Bihar's Lakhisarai Vidhan Sabha constituency that goes to polls in the first phase is said to be among the most backward regions of the state, a victim of repeated floodings by tributaries of the Ganga. Once a flourishing area known for its rich output of rabi crops and pulses, Lakhisarai has lagged behind with development schemes held up due to political inaction and bureaucratic red tape. This land used to be renowned for its rich harvest of pulses. Today, it lacks even the basic needs for development and progress. The biggest banes the fields of Lakhisarai face today is repeated flooding, a factor that has pulled down output drastically. The Ganges and its tributary, the Harhar, frequently flood their banks here, but little has been done either to check the flooding or to enable quick drainage. Seeding and ploughing is rendered virtually impossible, and instead of the crop, wild grass and weeds grow unchecked. The once prosperous farmer now lives in penury. समय पर पानी नहीं आता है, अगर पानी आ जाता है तो समय पर निकलता है नहीं, इसके वजह से झाड़ जंगल हो जाता है। In 2006, the Ministry of Panchayati Raj had ranked Lakhisarai among 250 of the country's most backward districts. The state government has come out with elaborate plans to correct the flooding problem. Among them, satellite surveys, agricultural maps, and a 4,200 crore rupee canal development project. Experts say output could double if these schemes are actually put in place. पानी निकासी अगर समय पे हो गया तो जोत बाव किसान कर पाएंगे हम लोग अच्छी तरह से, लेकिन विगत कई वर्षों से या कहें कि मतलब बहुत ही किसी सरकार ने इसे वो ध्यान नहीं दिया। Election time brings with it a fresh wave of promises of corrective action to bring Lakhisarai back on the path to progress. Lakhisarai goes to polls in the first phase on the 12th of October. The main contest here is to be between sitting MLA Vijay Kumar Sinha of the BJP and Ramanand Mandal of the Janata Dal United. विकास होगा, दलहन हड़ताल क्षेत्र डूब जाता है, बाढ़ आने के पानी की स्थिति होता है, ऐसा है, वो प्रत्येक साल बहुत दिन से डूबते हैं, लेकिन उसका व्यवस्था ऑलरेडी हो चुका है, कृषि मैप में बन चुका है, और अगले बार जो सरकार बनेगी उसमें आप स्वयं आकर देख लीजिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी इसी क्षेत्र से पदयात्रा का शुरुआत किए थे कि टाल योजना लागू किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस समस्याओं को लेकर के इस स्तर तक वो पहुंचे थे, उन समस्याओं को भूल गए। Cultivation of pulses and rabi crops is Lakhisarai's backbone, also once its pride and glory. But that aura has faded down the years, on the verge of dying out completely. Ripples of just that have been felt in rising prices of pulses around the country. Lakhisarai calls out desperately for a breath of revival. Bureau Report, Rajya Sabha Television. And that's all we have for you right now on Verdict 2015. But join us again tomorrow, same time, for the latest from Bihar.